Hi everyone. Today we are going to talk about hierarchy and competency of courts under Criminal Procedure Code. This is part 1 of the session. There'll be another part on this where we will specifically focus on competency of courts. Good afternoon, Nirmala. This is important for all states as this is a topic of CRPC and CRPC is one subject जो सारे states में आता है. This is a little background about me. I am Unnati Srivastava. I've done my master's in law from NLU Delhi in 2020. I got AIR2 in ALA 2019. I've also cleared the Supreme Court clerkship and I have faced the UP Judiciary interview in 2019 and have also written the mains of Delhi and Rajasthan Judiciary. This is my code whenever you get on Unacademy for anything to see the special classes or for any quizzes and tests, you must use the code UNNATILIVE. Or if you subscribe anything on Unacademy, you must use the code UNNATILIVE to avail your discounts. Moving on, you can follow my profile. The link is in the description box. You can follow my profile from there. Before we start the session, I hope you like and share the session as well for whomsoever it will be useful. You must share it with them. Please press the bell icon and also subscribe to the channel. Now, Unacademy has a team of dedicated educators where we are preparing you for cracking PCS J. Right now, Haryana और राजस्थान की वैकेंसीज आई हुई हैं and you can fill the form for both. Haryana ka 15th of September is the last date to fill the form. Whosoever जिनको ये नहीं पता है कि हरियाणा के फॉर्म्स खुल गए हैं, आई एम टेलिंग यू दैट हरियाणा के फॉर्म्स वापस से खुले हैं. जो पहले नोटिफिकेशन आके फॉर्म फिलिंग हो चुकी थी उसको दे हैव ओपनड इट अगेन टिल 15th of September एंड राजस्थान के फॉर्म्स भी चल रहे हैं एंड यू कैन फिल इट टिल 30th or 31st August, whatever is the last date, but August में ये खत्म होंगे. So we are hoping that we will have the exam either in October or in November. And in fact ये दोनों तो हमें already पता है कि आ रहे हैं, but all the states are going to publish the notification for the examination within 2021 itself. Now it can be any month of 2021. It so happens कि exam हो सकता है 2022 में हो, but notifications 2021 में काफी सारे आएंगे. So you must get on the app and start preparing. When you get on Unacademy, you get the chance to compete with thousands of aspirants in the scholarship tests, in the live quizzes, which actually helps you in evaluating your own preparation. There's something called free special classes on Unacademy. I also take free special classes. They are free of cost, exactly the way it is on YouTube. And also they are live. So you can interact with the educator, you can ask your questions. Every educator on Unacademy, they have a schedule that they follow. For example, I take class every 11 a.m. and I have a schedule that I follow that I'm going to share with you right now. I take Indian Contract Act on Monday. We just did a session on Contract Act at 11 a.m. today on Unacademy. You can get on Unacademy to get more information. You can follow my profile through the description box so that you do not miss any notification and you also understand what all I teach. I am anyway going to discuss it with you that what all I teach. I teach Indian Contract Act. I cover your CRPC, which happens on Sunday, and constitutional law on Saturday. I take Indian Evidence Act on Tuesday. IPC happens on Thursday. Soon there'll be a course that I'll be beginning on CPC. It would be either on Wednesday or on Friday. I hope to see all of you there. We will also begin with the local laws of Rajasthan and also UP. Since UP is, there is a good news about it that there might be a notification of UP coming very soon. So let's see, let's be positive, let's hope that there is a notification soon. So this is my schedule. These are free classes.
They happen every day on Unacademy at 11 a.m. Fine. If you feel कोई भी subject आपका इसमें से weak है, you just want to take one subject, तो you just have to follow this. किस दिन ये subject कराया जाता है, and you have to be there for the class so that, and come for the live classes so that you can also ask your doubts, you can discuss with the teacher, and you can also give them a feedback on what and how, or everything that you feel that should be included in the course. Teachers are quite flexible, so you must have that interaction. Now let me tell you what are the special class features. We have interactive live sessions that we anyway do on YouTube as well, but it happens in an atmosphere on an academy where teachers also, educators also, they encourage you to ask questions. If they feel that this is a difficult topic, they would pay attention and they would try to understand your psyche, if you've been able to understand it or not. There is something called poll for learners. Whenever we conduct any MCQ or we want to know your opinion about something, we conduct polls and we understand how many people are in favor or how many people are against. You can raise a hand and ask a question, for which you have to become a plus subscriber. If you subscribe to any course which is a plus subscription, you can use the code UNNATILIVE for availing you discounts. You must follow the educator that you like, that you would want to study from on an academy. My profile link is in the description box, so that you'd never miss a class. You can also download lecture notes, which is a very good feature. The kind of slides that you get to see on YouTube, that we make the similar kind of slides we have on an academy as well, and you can download those slides and keep it with you for revisions. And you can also go and watch the recorded lessons on an academy. Whatever we do in the live class, that will always be there, so you can always go back, but I would suggest that you do that only for revision purposes. If by chance you missed a lecture, you may go back and see it, and then you can learn from anytime, anywhere. That's something that YouTube is also offering you, and an academy offers it as well. These are the other features that we have on an academy. Once you get on an academy, you will realize that what a different kind of a world it is altogether. Now, I think you should block your calendar. Whosoever is preparing for Rajasthan Judiciary here, you should block your calendar for this batch, which is commencing on 18th of August, just 2 days to go. Because this batch is going to complete your 50% syllabus. It will complete all the syllabus, but 50% syllabus, that is of local law, ये पूरा this batch is going to complete, and also they will help you out with Hindi and English, which actually comes in your prelims. 30% of the paper is Hindi English. So you must get on this batch, and whenever you do that, just use the code UNNATILIVE. These are the subscription available. If you buy a 12-month subscription, you actually get 1 month free. If you buy a 18-month subscription, you can get 2 months free. If you buy a 24-month subscription, you can get 4 months free. So this is a great offer. Just remember, this offer is ending soon, so you must avail this. There are also mock tests available on an academy, and every Saturday and Sunday, which I can't stress more, that you have to go for the analysis of the same as well. These are the plus subscriptions that are available. Before we move forward, I would suggest that I would urge that you should like and subscribe our YouTube channel so you do not miss any notification. Because now is the time to prepare very, very well for your examination. This is a Telegram channel of an academy. Fine. Now let's talk about the hierarchy and competency of court. These are the sections that we cover for hierarchy today, that we are going to cover for hierarchy, competency, and of the code, section 6, 26, 28, 29. I think this is where we will stop today, and we will touch upon a bit of competency as well. Let's understand what section 6 talks about. Section 6 says classes, criminal courts. Besides the High Court and the courts constituted under any law other than this code. मतलब कि कोई ऐसी कोर्ट
जो CRPC में नहीं है उसकी बात, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely Court of Session, Judicial Magistrate of the first class, and in any metropolitan area, Metropolitan Magistrates. What is a metropolitan area? Is anyone aware what is a metropolitan area? Section 8 gives you the definition of metropolitan area. A metropolitan area is जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की population होती है. The state government may by notification. कौन डिक्लेयर करता है? ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम में पूछा जाता है कि कौन डिक्लेयर करता है. The state government may by notification declare that as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million. 1 million is 10 lakh. मतलब 10 लाख से ज्यादा की population. Correct, Nirmala. Shall be a metropolitan area for the purposes of the code. You must remember the section as well. Section 8 talks about it because this is your prelims question. So this is how we always study. We always try to, whatever word is defined in the act, we always try to go back and see that word and understand what was written in the bare act, क्योंकि वहाँ पे then and there आपका वो section complete हो जाता है, which is so important. Let's get back. Then they have JM2 and executive magistrates. Now let me give you a hierarchy. So section 6 actually talks about hierarchy of the court. Fair enough. Section 6 is about hierarchy of the court. Let me tell you ये क्या है. सबसे ऊपर आती है आपकी हाई कोर्ट, फिर आता है सेशंस जज, फिर आते हैं एडिशनल सेशंस जज, फिर असिस्टेंट सेशन जज. ये आपको समझ में आएगा. ये जो मैंने ये किया है ना, इसको और माइन्यूटली डिवाइड. ये जब हम लोग सेक्शन 28 और 29 पढ़ते हैं, उसमें जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, तो उसमें इस तरह का डिवीजन दिया है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि एक्चुअली हियरार्की ऑफ कोर्ट्स होती क्या है. एडिशनल सेशन जज, देन असिस्टेंट सेशन जज, देन कम्स योर CJM. अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो CMM. ठीक है. उसके बाद आपके हैं ACJM. If it's a metropolitan area, it will be ACMM. Okay. And then comes your JM1, which is MM. And इसके बाद आते हैं JM2. एंड इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. यस देवव्रता. सो देखिए, ये जो इन्होंने सेशंस और डिस्ट्रिक्ट का, तो जब डिस्ट्रिक्ट जज भी यहाँ पे ही है, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो आप ADJ बोलते हैं, ठीक है, इनको सेशंस बोलते हैं. जब ये क्रिमिनल ट्रायल कर रहे हैं तो इनको सेशंस बोलते हैं क्योंकि वो सेशंस कोर्ट होती है. डिस्ट्रिक्ट जज वुड मीन कि ये सिविल मैटर्स तो देखते ही देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं. उस पर्सपेक्टिव से हम इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं. फेयर इनफ. सो या योर जो भी आपने डाउट पूछा वो सही है. सेशंस जज डिस्ट्रिक्ट जज होता है. एडिशनल, ये इन लोग के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनको DC भी बोलते हैं, DM भी बोलते हैं. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आप उनको जो भी बोलना चाहें, बट दोनों पर्सन एक ही है. फाइन. ओके. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये सबसे नीचे आते हैं. तो हमने शुरू किया हाई कोर्ट से और हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तक पहुंचे. इनके पास, ये आप कभी भूलिएगा मत कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी पार्ट ऑफ हियरार्की होते हैं. ही इज अ पार्ट ऑफ हियरार्की. इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जो कि CRPC में ही बताया गया है कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जैसे 145 का ऑर्डर,
144 का ऑर्डर, ये सब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास होता है, तो इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, बट ये पार्ट आपके हिरार्की के ही होते हैं. Fair enough. So this is what section 6 is talking about. Section 6 is the favorite question of prelims, क्योंकि वो आपसे ये हिरार्की पूछते हैं और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हाई कोर्ट इसका पार्ट होगा. तो हाई कोर्ट इसका पार्ट होता है. और प्लीज आप ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस हिरार्की, एटलीस्ट अंडर सेक्शन 6. सेक्शन 6 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिरार्की. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो आई होप यू विल बी नाउ वेल वर्स्ड विद इट कि सेक्शन 6 में क्या लिखा है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी एक्सप्लेन यू कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है. Then we will read section 28, because section 26, 27, 28 and further on 209, 407, 323 ये सब हम लोग जब पढ़ते हैं तो 409 ये सब कुछ कॉम्पिटेंसी से रिलेट करता है. और कॉम्पिटेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया हिरार्की सेक्शन 6 में है, उसी तरह से कॉम्पिटेंसी सेक्शन 26 से आती है. ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी दो तरह की होती है, कॉम्पिटेंसी टू पनिश एंड कॉम्पिटेंसी टू ट्राई. पनिश का क्या मतलब होता है? पनिश का मतलब होता है कि आप कितना पनिशमेंट दे सकते हो, और ट्राई का मतलब होता है किस मैटर को ट्राई कर सकते हो. अब आप समझिए, ये वाली जो कॉम्पिटेंसी है ना, ये सेक्शन 26 से आती है, और ये वाली कॉम्पिटेंसी 28 और 29 में दी है कि कौन सा जज कितनी पनिशमेंट दे सकता है. ये 28 और 29 में लिखा है. I hope you are with me. So I am reading section 28 for you. Sentences which High Court and Session Judge may pass. A High Court may pass any sentence authorized by law. Any sentence का मतलब क्या होता है? Any sentence का मतलब होता है डेथ भी वो दे सकता है, डेथ तक की सजा वो दे सकता है, और वो कोई और भी सजा दे सकता है, और वो कोई भी फाइन दे सकता है, एनी फाइन. दिस इज व्हाट इट मीन्स. हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ. मैक्सिमम सेंटेंस क्या है? डेथ. और एनी सजा मतलब कोई भी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी, कैसी भी सजा दे सकता है. और एनी फाइन, कोई भी फाइन भी दे सकता है वो. उसके बाद लेट्स रीड. अ सेशंस जज SJ and additional session judge ASJ may pass any sentence authorized by law. अच्छा, ये भी डेथ भी दे सकते हैं, एनी और सेंटेंस दे सकते हैं, और एनी फाइन दे सकते हैं. But any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by the High Court. Can you tell me confirmation किस सेक्शन में है? We read section 366 and section 368 for this of CRPC itself, जिसमें अगर एडिशनल सेशन जज ने डेथ की सेंटेंस पास करी है तो उसको उसका कंफर्मेशन के लिए इट गोज टू दी High Court, and once it gets confirmed by the division bench of the High Court, that is when the death sentence can be executed. So it is always dependent on the confirmation from the High Court. They can pass a sentence up to death, but that has to require confirmation from the High Court. Now, an assistant session judge may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 10 years, which means सिर्फ 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, प्लस एनी फाइन. फाइन के बारे में कोई बात नहीं की है, तो कोई भी फाइन दे सकते हैं.
Maximum punishment is 10 years. This is the maximum punishment that a assistant sessions judge can pass, which is 10 years. Let's move forward. Now what section 29 talks about? Sentences which magistrates may pass. First, the court of CJM may pass any sentence authorized by law except a sentence of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years, which means maximum punishment that a CJM can give is 7 years plus any fine. But since this section has not talked about ACJM, so this clause will include ACJM as well. So ACJM can also pass a maximum sentence of 7 years and any fine. Fair enough? Second, the Court of Magistrate of the First Class, which is JM1, may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years. मतलब 3 साल की मैक्सिमम सजा दे सकते हैं और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज प्लस 10,000 तक का मैक्सिमम फाइन दे सकते हैं. दिस इज JM1. JM2 क्या कर सकते हैं? JM2 को हम लोग JM2 ऐसे बोलते हैं, बट ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास हुए. The court of a magistrate of the second class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year. मतलब maximum punishment 1 year की दे सकते हैं और a fine not exceeding 5,000 rupees. 5,000 का maximum fine दे सकते हैं. This is what is allowed for a JM to do. JM2 to do. Fine. So this is what section 29 talks about. Now let's understand section 26, which is a very, very important section. Let's read and then understand what it says. Courts by which offences are triable, subject to the other provisions of this code, any offence under IPC may be tried by the High Court, Court of Session, any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable. B. Any offence under any other law, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by the High Court, or any court by which such offence is shown in the first schedule to be triable. अब इसको समझिए कि 26 क्या कर रहा है. 26 आपको बता रहा है ऑफेंस किसके द्वारा ट्राइबल होगा. ऑफेंस ट्राइबल बाय फर्स्ट कोर्ट मेंशन्ड इन द schedule in the first schedule. If anybody has seen the schedule here from CRPC, you must have noticed कि वहां पे offense लिखा होता है, उसका section लिखा होता है, ये लिखा होता है कि वो cognizable होगा कि non cognizable होगा, bailable होगा कि non bailable होगा, और उसके आगे court लिखी होती है कि वो किस court से tribal होगा. तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है. And it also gives a concurrent jurisdiction to Court of Session and High Court. अब ये आपको समझ में आता है कि पहले क्या होगा, कोई भी ऑफेंस होगा उसको हम पहले देखेंगे शेड्यूल में जाके. जैसे कि लेट्स से 378 इज थेफ्ट. सो फर्स्ट वी विल गो टू द फर्स्ट शेड्यूल एंड सी कि ये किसके द्वारा ट्राइबल है.
Let's say it is triable by JM1, which is written in the first schedule. पर ये इसके द्वारा ट्राइबल होने के बाद भी your High Court and Court of Session, they both have a concurrent jurisdiction to try this offense. They have a concurrent jurisdiction to try this offense. Now, you tell me something कि ओरिजिनल jurisdiction क्या होता है? ओरिजिनल jurisdiction होता है court of first instance. So, the rule is that the case will first go to the lowest of court, जो सबसे नीचे वाली कोर्ट होगी, which is your JM2, JM1 सॉरी, जो भी मतलब उसमें मेंशन्ड होगी स्केड्यूल में, वो वहां पे जाएगा. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है जहां पे डायरेक्टली मैटर सबसे पहली बार जाता है, नॉट इन अपील, राइट. सो दिस इज व्हाट विल हैपन कि जो स्केड्यूल में मेंशन होगा वहां पे जाएगा. सो सवाल ये उठता है कि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन दिया क्यों है, विच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. और एक चीज अभी मैं आपको ये पूरा समझाऊंगी क्योंकि यहां से हमारा कॉम्पिटेंसी का टॉपिक शुरू होता है. दिस आई विल एनीवे एक्सप्लेन यू, ये हम कल भी पढ़ेंगे. वी विल बिगिन दिस टुडे बट वी विल स्टडी दिस टुमारो exactly at the same time, which is 3 p.m. and it has got a lot of sections to be dealt with. But before that, let me explain you the second part of section 26, which says any offense under any other law. Any other law का मतलब IPC के अलावा किसी और लॉ में, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन या कोई भी और एक्ट, ठीक है, कोई भी और एक्ट हो सकती है. When any court is mentioned in this behalf in such law, मतलब उस लॉ में खुद कोर्ट मेंशन्ड होगी, जैसे कि सेबी एक्ट, इसमें भी ऑफेंसेस होते हैं. तो इसमें जो कोर्ट मेंशन्ड होगी आप उससे ट्राई करोगे, उसके पास जाएगा सबसे पहली बार by such court. And when no court is so mentioned, अगर कोई कोर्ट अगर उसमें कोई कोर्ट नहीं मेंशन होगी तो वो जाएगा हाई कोर्ट के पास, या फिर any other court by which such offense is shown in the first schedule to be tribal. या हम first schedule पे जाएंगे, यहाँ पे हम कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं जा रहे. इफ यू नोटिस, जो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन को मिला है वो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं मिला है. फेयर इनफ, ठीक है. अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर कोर्ट मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में तो फिर हमने हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन क्यों दिया है, यही मैंने पूछा. When in cases mentioned in schedule, then why has concurrent power been conferred upon court of session and high court? Today what we are going to do is, we are not going to read the sections today. We will read the sections tomorrow. I hope to see you all again at 3 p.m. which will be the second part of this session. But today we will understand the concept. What is the concept behind this? क्योंकि there is something called power of withdrawal. Can you type in the comment section court of session और high court की power of withdrawal कहाँ दी है? ये power of withdrawal high court और court of session दोनों के पास होती है. कॉन्करेंट पावर बेटा ये है कि कॉन्करेंट का मतलब होता है कि सेम पावर ऑलरेडी स्केड्यूल से आपको मिल रही है, बट वो ही सेम पावर टू ट्राई
आपने हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को भी दे रखी है, दैट इज कॉन्करेंस। कॉन्करेंस सब कुछ एक साथ, मतलब सेम पावर। आपने बोला कि आप स्केड्यूल में जाओ और देख लो कि ये ऑफेंस किस जज से ट्राइड है और आप उसको ट्राई कर लो, लेकिन वही सेम पावर टू ट्राई अपने हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को दिया है। और ये जो सारी है ना, ये पावर ऑफ विड्रॉल जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी कॉम्पिटेंसी, ये करने की पावर, ये सब कुछ सेक्शन 26 देता है। कैन यू टेल मी कि पावर ऑफ विड्रॉवल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कहाँ है? हाई कोर्ट के पास सेक्शन 407 में है एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास सेक्शन 409 में है। Right? This is their power of withdrawal. We will understand tomorrow what is the power of withdrawal, but I'll also explain you something with respect to court of session. Court of session के पास competency to try सेक्शन 26 से आती है, क्योंकि सेक्शन 26 में मेंशन्ड है। बट कोर्ट ऑफ सेशन के पास तीन सेक्शंस हैं जिससे उसके पास केस आ सकता है, राइट? एक है सेक्शन 323, एक है सेक्शन 209 और एक है सेक्शन 409। सेक्शन 323 में कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल होता है। We will tomorrow understand what committal is. Section 209 में जब कोर्ट ऑफ सेशन से वो exclusively ट्रायबल होता है। I am hoping tomorrow when you come for this session, you at least must have done a bare-act reading of these sections. I am going to explain you thoroughly about these sections anyway. Section 409 is withdrawal, as I've already talked about. थोड़ा सा I'll also explain you what section 323 is and section 209 is. सेक्शन 209 में मैटर तब जाता है जब वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल, मतलब जेएम के पास मैटर आया, जेएम ने देखा कि ये मैटर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब ये मैटर को कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो वो 209 में इसे कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कमिटल इन 323, जब when the offense is exclusively tribal by, I made a mistake, let me explain you. Section 323 talks about when the offense is exclusively tribal by court of session. No, I was right, okay. 209 is when the offense is exclusively tribal by the court of session, and 323 talks about when the offense was triable by JM, but still it has to be committed. Still it has to be committed to the court of session. Fine. Let me just explain you this thing. इसको वापस से समझो। 323 and 209 दोनों कमिटल की बात करते हैं। कमिटल टू कोर्ट ऑफ सेशन। When we talk about 209, 209 talks about when the case is exclusively triable by court of session, and 323 talks about when the offense was triable by JM, but still he commits it to the court of session.
Tomorrow, we will read these sections and also understand. I was just giving you a brief understanding. Whatever confusion was created by me, I think I have sorted that confusion. And tomorrow, we are going to talk about 407, 209, 323 and 409 कि इनमें withdrawal और committal कैसे होता है, and we'll also understand something called 192 which is making over of cases. All right, so I hope this is clear. We have completed hierarchy and we will do these sections tomorrow. So I hope to see you all in the part 2 of the video as well. But before you leave, I would like you to share and like this session, and also press the bell icon and subscribe to the channel so you do not miss any notification. But for tomorrow, I'm specifically telling you that 3 p.m. we are doing CRPC. We are finishing off competency, which is in part 2. Hope to see you all tomorrow.